Good morning, students. Uh, Today we will discuss the case study of nature. Like nature's fury means nature का गुस्सा. ठीक है. So through cyclone we will study this. Yesterday we had discussed the air pressure and wind. So hope you understood the chapter. So the reason of studying this case study is behind that we must know the system of like how the nature changes, like how the season or the rainfall take place. So cyclone is one of the features or one of the activity which take place during the you can say in our country. So it is one kind of rainfall even, and cyclone in Hindi we called it Chakravat, and they are known by the different name of the in the world's countries. So cyclone generally in our India they come, and because they never you can say calm and quiet, they destroy the nature, and they destroy the particular reason. So generally they become the cause of destruction. So why it happens and how many times they have been, you can see the history of India. Like means every year some cyclone we face, and very beautiful name you can get when you search from internet. Like this time Alphan cyclone it come. So it is on the coastal region they generally come, like Orissa, Andhra, Tamil Nadu, and especially in Gujarat. There are very famous cyclone destructions are there in India. So let's take a study of cyclone, that is nature's fury. So, Orissa, located on the eastern sea coast of India, is prone to cyclones that origin in the bay. Prone का मतलब होता है जैसे कोई भी region affected है, हम कहते हैं prone, earthquake prone region. सो साइक्लोन प्रोन रीजन जो आपका है वो कोस्टल में ओडिशा ज्यादातर वहां पर आते हैं साइक्लोन. So Bay of Bengal on 17-18 October 1919, cyclone hits 5 district of the states. Another super cyclone occurred on 29 October 1999 that devastated large proportion of the state, and the damage caused were mainly due to three factors: the wind velocity, the rain, and the tidal surges. Tidal surge means like the killer waves, like means high kind of waves when they enter, and the winds up to 260 kilometer per hour lasted for 30 hours, 36 hours. These high velocity winds uprooted the trees, damaged the kacha houses. Kacha houses means जो permanent house नहीं होते, अच्छी building नहीं होती, like huts and slums. So rooftop, several industrial sheds and other houses were also blown away. मतलब ये इतनी speed थी इसकी कि कुछ नहीं छोड़ा. Recently, if you have seen in television, अल्फान में भी ऐसा ही हुआ था कि the destruction took place very much. Power supply and telecom lines snapped completely. मतलब वो बिल्कुल खत्म हो गया, सब कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है. Heavy rainfall occurred under the influence of cyclone for 3 days. Continuously, these rain led to flooding in the major river of Orissa. The cyclonic wind caused tidal flooding in the tidal waves and swept 20 kilometer inland and brought massive destruction to the coastal areas. You must imagine कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम अगर हम बात करें, हम इंडिया का कोस्टल रीजन पढ़ रहे हैं, उड़ीसा, ये वाला रीजन. तो यहाँ पे कितना, बिकॉज यहाँ पर सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये रीजन कितना इफेक्ट करता है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. सो फ्लडिंग द मेजर रिवर्स इन ओडिशा, और रिवर मतलब वहां पर एक फ्लड का कॉज भी हो गया. साइक्लोन विंड्स कॉज टाइडल वेव्स टू स्वेप्ट 20 किलोमीटर inland and brought massive destruction to the coastal area. 7 to 10 meter high tidal waves intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. ऐसा होता है कि इतनी मतलब स्पीड से जब कोस्टल रीजन से जो है आपकी
वेव्स अंदर जाएंगी तो क्या होगा, जितना भी कोस्टल रीजन है ये यहाँ पर क्या है, बेसिकली ईस्टर्न घाट इज वेरी मच फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, और पूरी की पूरी क्रॉप क्या हुई, इट डिस्टर्ब्ड। इंट्रूडेड का मतलब होता है एंटर करना, ठीक है, इस तरह से एंटर करी, इतने स्विफ्टली एंटर करी ये वेव्स, तो जिससे क्या हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ फ्रॉम पीपल एंड प्रॉपर्टी। साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन गल्फ ऑफ थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड क्या है, नेबरिंग कंट्री है, तो वहां पर भी इसका डिप्रेशन बना रहा, इसका इन्फ्लुएंस था नियर द कोस्ट ऑफ पोर्ट प्लेयर। पोर्ट प्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल है, तो पोर्ट प्लेयर ऑन 25th of October 1919 ग्रेजुअली मूव्ड इन between northwest direction. It intensified into the super cyclonic and hit an area between Arizona and Balikuta in Orissa in 29 October 10:30 a.m. सुपर साइक्लोन मतलब साइक्लोन एक सिंपल कंडीशन, सुपर साइक्लोन यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी डिवास्टेटिंग, वेरी you can say dangerous, swept to entire coast of Orissa, including the cities Bhubaneswar, the capital of Orissa, and Cuttack, and 28 coastal towns. About 13 million people were affected, and a large number of livestock were killed. Standing crops, paddy, vegetable, fruits were heavily damaged due to the salinization of caused tidal surge, and large tract of agricultural land have turned into infertile. Large tract of salt, teak, and bamboo plantation, these are the name of trees, were disappeared. And massive, you can say, mangrove forest between the Paradip and Konark vanished. Konark is temple. तो यहाँ तक कि देखिए आप, कुछ भी नहीं बचा, मतलब when we talk about the forest, they vanished. When we talk about the livestock, it disturbed, it killed. और इंसान मतलब 13 मिलियन पीपल का मतलब है, अब अगर आप कहें 1 मिलियन में 10 lakhs होते हैं, तो 130 lakh पीपल जो थे वो अफेक्ट हुए। तो इतने लोग इससे मतलब इतना डिस्ट्रक्शन हुआ। तो साइक्लोन इज दे आर सम यू कैन से नॉट गुड इफ दे आर you can say come like in this form, the super cyclone. So this was about the case study of cyclone, nature's fury. And after that we have three kinds of rainfall. So like first rainfall is, that is cyclonic. This is the picture of cyclonic rainfall. साइक्लोनिक रेनफॉल का मतलब है लाइक एक तरीके से क्या है, मेनली प्रेशर जो है ये दो टाइप का होता है, यहाँ पर आपका डिटेल नहीं दिया है, पिक्चर के थ्रू ही हम समझा रहे हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कोल्ड एयर और वार्म एयर, यहाँ बेसिकली हम रेनफॉल का डिस्कस कर रहे हैं। तो रेनफॉल से किस तरीके से है, जब कोल्ड एयर, अगर ये कोल्ड में है, कोल्ड फ्रंट पे है, तो क्या होगा, कोल्ड एयर जब यू कैन से इट्स राइजेस, और ये एक थंडर स्टॉर्म के साथ यहाँ पर बारिश होती है। वार्म एयर है सिंपली, तो हैवी रेनफॉल विल टेक प्लेस, तो इसको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, विच इज वेरी मच नोन इन इंडिया, ठीक है। आपका ये रिट्रीटिंग मानसून में जो होता है, एक एडवांस मानसून है जो अब चल रहा है, लेकिन विंटर के टाइम पर रिट्रीटिंग मानसून होता है, तो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इंडिया में आता है। So that particular is very much important reference of rainfall, cyclonic. Another is आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल है, इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज अगेन इन रेफरेंस ऑफ इंडिया, कि जैसे सपोज करिए इंडिया में हिमालय है या और माउंटेन है, सो क्या होता है, मॉइस्चर लेडन विंड्स व्हेन इट स्ट्राइक्स टू यू कैन से ऑब्स्टिकल, सो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन से प्रेसिपिटेशन होगा, एंड रेनफॉल टेक प्लेस इन यू कैन से माउंटेन और द फुटेल्स ऑफ माउंटेन एंड नियर बाय रीजन, तो पूरा रीजन इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। Another cause is, another third kind of is that convectional rainfall. कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये रेनफॉल ज्यादातर कहाँ होती है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन आपको समझना चाहिए क्या है, वेयर टेम्परेचर इज हाई, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द सब ट्रॉपिकल रीजन, लाइक बिलो, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर का, तो इस तरह की रेनफॉल ज्यादातर आपको साउथ में मिलती है। जनरली जहां पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सपोज करिए सिंपल लैंड है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये सिंपल लैंड है, और लैंड व्हेन हीट्स अप,
ठीक है, तो इसके एयर जो है वो वार्म होकर कांटेक्ट में ऊपर जाती है, ऊपर जाने से क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होने से प्रेसिपिटेशन होता है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, जरूरी नहीं है कि बैरियर होगा तभी बारिश होगी इंडिया में, तो ये तब का है जबकि जहाँ पर मेनली टेम्परेचर इज वेरी मच हाई। सो इन दिस वीडियो टिल हेयर विल डिस्कस। थैंक यू, हैव ए नाइस